Good morning, students. Students, as we know that we are going through chapter 5 from Snapshots, and the title of the chapter is Mother's Day. We have been reading this chapter for a long time because it is a pretty long chapter, and it is in the form of one act play written by J.B. Priestley. Okay. In the previous lecture, we have read that when Mrs. Fitzgerald and Mrs. Pearson are talking to each other, in the meantime, George Pearson enters and he just uh, wants and sees what Mrs. Pearson is saying to him. He also wants to scold Mrs. Pearson quite angrily and says that she has made Doris crying, and Doris is crying upstairs and she is crying her eyes out. देखिए जॉर्ज कहता है उसे मिसेस पियर्सन से कि उसकी वजह से डॉरिस उनकी बेटी रो रही है और उसने रोते रोते अपनी आंखें सुझा दी. ओके स्टूडेंट्स, so now we are going to start from page number 48, and there is a speech of Mrs. Fitzgerald wailing, "Oh dear, I ought to have known. Oh dear, I ought to have known it." So, when George listens to the words of Mrs. Fitzgerald, so he at once staring at her, quite annoyed. उसकी ओर घूरता है और नाराज होता है. कहता है, "You ought to have known." Why ought you to have known? Nothing to do with you, Mrs. Fitzgerald. Mrs. Fitzgerald, that all these things do not have anything with you. All the things do not relate to you. Nothing to do with you, Mrs. Fitzgerald. Look, we are at 6s and 7s here just now, or perhaps you will excuse us, and you can see at this time we are not in proper order. We are at 6s and 7s and we are quarreling each other, and perhaps you will excuse us for that. So when Mrs. Pearson listens to the words of George Pearson, so now Mrs. Pearson says, before Mrs. Fitzgerald can reply, इससे पहले कि Mrs. Fitzgerald कोई आंसर दे पाती, I won't excuse you, George Pearson. कहती जॉर्ज पियर्सन, मैं तुम्हें इसके लिए क्षमा नहीं करूँगी. Because you should behave properly with the neighbor, Mrs. Fitzgerald. Next time a friend and neighbor comes to see me, just say something when you see her. Good evening, or how do you do? Or something, and don't just march in and sit down without a word. It's bad manners. And now Mrs. Pearson becomes angry and says to George Pearson. अब देखिए, जब जॉर्ज मिसेस फिट्जराल्ड के साथ इस टाइप का बिहेव करता है तो मिसेस पियर्सन उससे कहती है कि मैं तुम्हें इस बात के लिए क्षमा नहीं कर सकती. अगली बार जब मेरा कोई नेबर, मेरी कोई पड़ोसन या मेरा कोई फ्रेंड आए तो उसे देखने पर आपको उसे गुड इवनिंग कहना चाहिए या ये कहना चाहिए, हाउ डू यू डू, और you should behave something in
proper manner and you have not done it, it's all bad manners. तो मिसेस फिट्जराल्ड सेज नर्वसली. अब देखिए मिसेस फिट्जराल्ड नर्वसली इस बात को कहती हैं, नो इट्स ऑल राइट, नो ऑल द थिंग्स आर क्वाइट राइट. नाउ मिसेस पियर्सन, नो इट इज नॉट ऑल राइट, वी शैल हैव सम डिसेंट मैनर्स इन दिस हाउस और आई विल नो द रीजन वाई. अब देखिए अकॉर्डिंग टू मिसेस पियर्सन इट इज नॉट वेल, इट इज ऑल द बैड मैनर्स. कहती है कि नहीं ये सब ठीक नहीं है, ये जॉर्ज ने जो किया है उसके बैड मैनर्स हैं और इस घर में हम सब डिसेंट तरह से रहते हुए आए हैं, डिसेंट मैनर्स को हमने अपनाया है. यदि नहीं तो आई जस्ट वॉन्ट टू नो द रीजन वाई. ग्लेयरिंग एट जॉर्ज, जॉर्ज की तरफ ग्लेयर करते हुए. वेल अब देखिए जब जॉर्ज ये सब सुनता है तो इंटीमिडेटेड, वेल व्हाट, थोड़ा घबराते हुए कहता है व्हाट. तो मिसेस पियर्सन टॉन्टिंग हिम. अब देखिए मिसेस पियर्सन फिर उसे टॉन्ट करते हुए कहती हैं, ताना मारते हुए कहती हैं कि व्हाई डोंट यू गेट ऑफ टू योर क्लब. बोले व्हाई डोंट यू गो टू योर क्लब, तुम अपने क्लब क्यों नहीं चले जाते. स्पेशल नाइट टुनाइट एंड टुनाइट देयर इज ए स्पेशल नाइट isn't it? They will be waiting for you. The people at the club will be waiting for you, wanting to have a good laugh. Go on then, don't disappoint them. अब देखिए as George had already told his wife that there was a snooker match tonight and he would also have supper there. So at this Mrs. Pearson says to him, why don't you get off to your club? The people at the club will be waiting for you. They will be arranging dinner for you and you just want to have a good laugh in the company of them. Go to your club and don't disappoint the club members. तो देखिए जॉर्ज बिटरली, दैट्स राइट. अब जॉर्ज ये जब सुनता है तो बिटरली इन हार्श वर्ड्स में बोलता है, दैट्स राइट, मेक मी लुक सिली इन फ्रंट ऑफ हर नाउ. कहता है डोंट इंसल्ट मी इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड एंड नेवर. गो ऑन, डोंट माइंड मी. 6s and 7s and all the things are in disorder. All the things are at 6s and 7s. तो देखिए कहता है जो कि मुझे नेवर के सामने, अपने फ्रेंड के सामने इंसल्ट करूं, सब कुछ अस्त व्यस्त है. Poor Doris been crying her eyes out. Poor Doris has been crying. बेचारी डोरिस रो रही है. Getting the neighbors in to see the fun and you are just creating a kind of fun in front of neighbor. Suddenly losing his temper, glaring at Mrs. Pearson and shouting. अब देखिए अचानक ही all of a sudden George at once becomes angry and he loses his temper and glaring at Mrs. Pearson and shouting. अचानक ही देखिए जॉर्ज पियर्सन एकदम नाराज हो जाता है, मिसेस पियर्सन की ओर घूरता है और चीखता है कि ऑल राइट, लेट हर हियर इट, व्हाट्स द मैटर विद यू, हैव यू गॉन बार्मी और व्हाट. अब कहता है जॉर्ज मिसेस पियर्सन से कि व्हाट इज द मैटर विद यू, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, हैव यू गॉन मैड. अब जब जॉर्ज से नहीं रुका जाता है तो मिसेस पियर्सन से कहता है, मिसेस पियर्सन तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम पागल तो नहीं हो गई. तो मिसेस पियर्सन अगेन जंपिंग अप सेवेजली, इफ यू शाउट एट मी अगेन लाइक दैट जॉर्ज पियर्सन, आई विल स्लैप योर बिग फैट सिली फेस. नाउ
Mrs. Pearson equally becomes angry. Mrs. Pearson भी नाराज हो जाती है, कहती है George Pearson, if you shout at me like that again, यदि तुम दोबारा मेरी तरफ या मुझ पर ऐसे चिल्लाए, शाउट किए, तो I will slap your big fat silly face, तो मैं तुम्हारे बड़े सिली फेस पर चाटा लगाऊंगी, स्लैपिंग करूंगी. So now Mrs. Fitzgerald mourning, mean expressing some pain. Oh no, please, Mrs. Fitzgerald. Mrs. Pearson sits. Now Mrs. Pearson sits. अब देखिए, जब मिसेस पियर्सन जॉर्ज से इस टाइप्स का बिहेव करती है, बात करती है कि इफ ही वुड शाउट एट हर अगेन, तो शी वुड slap him. When George listens to the words of Mrs. Pearson, so George, staring at her bewildered, looks at his wife quite cautiously and bewildered, amazed. Either I am off my chum or you two are. बोले, या तो मैं पागल हो गया हूँ या तुम लोग. How do you mean? No, please, Mrs. Fitzgerald. No, don't interrupt, Mrs. Fitzgerald. Look, you are Mrs. Fitzgerald. So why are you telling yourself to stop when you are not doing? Now come to page number 49. Anything. अब देखिए, कहता है जब meaning thereby you are Mrs. Fitzgerald and you don't have any right to interrupt us to speak in our matter. Tell her to stop, then there would be some sense in it. Tell Mrs. Pearson to stop. And again, staring at Mrs. Pearson, फिर देखिए मिसेस पियर्सन की ओर घूरता है, एकटक देखता है. I think you must be Treadly. Really, I think that you are drunk and you are not in proper sense. कहता है, मैं सोचता हूँ कि तुम प्रॉपर सेंस में नहीं हो. यू आर ड्रंक, तुम नशे में हो. तो देखिए मिसेस पियर्सन फिर स्टेयरिंग अप सीरियसली. Say that again, George Pearson. George Pearson, you just repeat your words, whatever you have said. अब देखिए फिर जॉर्ज intimidated, becomes quite frightened and threatened. All right. अब देखिए, in the meantime, Doris enters left slowly, looking miserable. अब देखिए इसी दौरान क्या होता है कि डोरिस वहाँ आ जाती है. She looks quite miserable and disappointed. She is still wearing the wrap or shawl. Mrs. Pearson sits on the settee and Mrs. Pearson sits on the settee. Okay. So Mrs. Fitzgerald, hello Doris dear. So when Mrs. Fitzgerald looks at Doris, she at once asks how she is. So Doris miserably, hello Mrs. Fitzgerald. Mrs. Fitzgerald, I thought you were going out with Charlie Spence tonight. तो देखिए मिसेस फिट्जराल्ड कहती है कि आई थॉट दैट यू वर गोइंग आउट विद चार्ली स्पेंस टुनाइट, कि आज रात आप चार्ली स्पेंस के साथ जा रही हो. तो डोरिस एनॉयड, व्हेन डोरिस लिसन्स टू हर वर्ड्स ही बिकम्स एनॉयड. व्हाट्स दैट टू डू विद यू, वेदर आई शुड गो विद चार्ली स्पेंस और नॉट. तो मिसेस पियर्सन sharply stop that. You should stop. You should not talk to her like that. तो मिसेस फिट्जराल्ड nervously,
No, no, no. It's all right. Let her say so. So Mrs. Pearson severely, it is not all right. I won't have a daughter of mine talking to anybody like that. Oh, Mrs. Pearson says to Mrs. Fitzgerald, no, it is not right. Mrs. Pearson Fitzgerald से कहती है ये ठीक नहीं है. मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी किसी दूसरे से इस तरह से बात करे. Now answer Mrs. Fitzgerald properly. कहती है Mrs. Fitzgerald को properly answer दो, Doris, and go upstairs again. And go upstairs again. From where you have come. Doris looks wonderingly at her father. अब देखिए Doris अब अपने फादर की ओर देखती है. जॉर्ज इन डिस्पेयर, जॉर्ज थोड़ा निराश होते हुए कहता है डोंट लुक एट मी, कहता है डोंट लुक एट मी डोरिस, आई गिव इट अप, आई जस्ट गिव इट अप. मिसेस पियर्सन fiercely, horribly, well, answer her. तो डोरिस now sulkily, I was going out with Charlie Spence tonight. डोरिस कहती है कि I was going out with Charlie Spence tonight, but now I have called it off. कहती है मैं चार्ली स्पेंस के साथ जाने वाली थी, but now I will not. कि मैं चार्ली स्पेंस के साथ आज रात जाने वाली थी, and now I have changed the program. I have called it off. कहते अब मैंने ये प्रोग्राम ख़त्म कर दिया है. तो मिसेस फिट्जराल्ड, oh what a pity dear, oh really what a pity, why have you done so? तो Mrs. When Doris listens to the words of Mrs. Fitzgerald, तो Doris with a flash of temper, because if you must know, my mother has been going on at making me feel miserable and saying he has got buck teeth and is half-witted. कहती है अब देखिए जब मिसेस फिट्जराल्ड की बात सुनती है डोरिस तो नाराज होके कहती है, क्रोधित होके, क्योंकि यदि जानना ही चाहती हो तो माई मदर मिसेस पियर्सन is angry with me and she is saying that Charlie Spence has buck teeth and half-witted. तो Mrs. Fitzgerald rather bolder to Mrs. Pearson. Oh, you should not have said that. Oh, Mrs. Pearson, you should not have said that. Okay, students. तो Mrs. Pearson sharply, Mrs. Fitzgerald, I will manage my family, you manage yours. बोले no, I will manage my family and family members, you just do yours. Now George grimly taking her off. Now you are Annie. Mrs. Pearson even more grimly, they are waiting for you at the club. George, don't forget. अब फिर कहती है कि जो क्लब मेंबर्स हैं वो तुम्हारा वेट कर रहे होंगे. Don't forget to go there and don't you start crying again, Doris. And Doris, you don't start crying again. Mrs. Fitzgerald getting up with a sudden decision. That's enough, quite enough. अब देखिए जब मिसेस फिट्जराल्ड इस बात को सुनती है कहती that's enough, it is quite enough. George and Doris stare at her bewildered, and at this George and Doris stare at her quite amazed and surprised. Okay, students, so that's all in this lecture. We shall go through the next lecture in the next video. Thank you.